बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम रीडिंग टेक्स्ट 3 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन कौन से इदारे मुंसलिक हैं और उनका मिशन क्या है और ये किस तरह से दुनिया के लोगों की मदद करते हैं। जैसा कि पहले दो हिस्सों में वाज़ेह कर दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम दुनिया से जहालत, बीमारी और नाइंसाफ़ी ख़त्म करना है ताकि दुनिया में अमन और खुशहाली को फ़रोग़ मिल सके, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन बहुत से इदारों के साथ मिलकर काम करता है। कुछ इसका हिस्सा हैं और कुछ आज़ादाना तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं। इस सिलसिले में पहला नाम इंटरनेशनल बैंक का आता है, जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर नेशंस को कर्जे देता है ताकि वो अपने इलाके में अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स तामीर कर सकें और अपनी आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सकें। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का नाम आता है, जिसका काम दुनिया में बच्चों की तालीम और तरबियत और फलाह बहबूद पर काम करना है। तीसरे नंबर पर जनाब WHO का जिक्र है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मिशन है कि दुनिया से बीमारियों और वबाओं का खात्मा किया जाए और इसके लिए इसके डॉक्टर्स और रिसर्चर्स पूरी दुनिया के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम मेंबर ममालिक की रहनुमाई करना है कि कैसे ज़राअत के जदीद तरीकों से कम वसाइल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाया जा सके ताकि दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो सकें और भूख और गुर्बत का दुनिया से खात्मा किया जा सके। और यूनेस्को का काम दुनिया में लोगों की ज़हनी तरबियत करना है कि वो कैसे इल्म हासिल करें, नई नई तहकीकात से फ़ायदा उठाकर अपने अपने शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना सीखें और तरक्की करें। तो आइए सबसे पहले उन सवालात के ऊपर नज़र डाल लेते हैं जो कि आपने इस रीडिंग को सुनते हुए जिनका जवाब आपने देना है। नंबर 1, मैक्सिको के एक छोटे से गांव ने 1951 में इंटरनेशनल बैंक के दिए हुए कर्ज से कैसे फ़ायदा उठाया और वहां पर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आई। नंबर 2, WHO कब शुरू हुई और कब इसने बतौर एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और इसका दिन कब मनाया जाता है। नंबर 3, इंडिया के सूबे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के तिराई डिस्ट्रिक्ट में WHO ने लोगों को किस बीमारी से निजात दिलाई। नंबर 4, यॉज किस किस्म की बीमारी है और WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कैसे इंडोनेशिया से यॉज का खात्मा किया। नंबर 5, FAO कब शुरू हुई और इसके मकासद क्या क्या हैं और यूनेस्को किन तरीकों से दुनिया में इल्म, शऊर और टेक्नोलॉजिकल आगाही को फरोग देता है। तो चलिए जरा सबक को पढ़ते हैं। पार्ट 3, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। There are several specialized bodies associated with the work of the UN. Some of these are parts of the UN organization, some are independent but are closely connected with the work of UN. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. There is the International Bank, which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness, such as electric power plants, roads, railways, canals, and flood control. An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast of Mexico. In 1951, the bank gave loan for an electric plant. Within 3 years, the population increased threefold. Industrial users of electricity increased from 3 to 33. The town started a radio station, a daily newspaper, and a night school. There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built. There is the United Nations Children's Fund, UNICEF, the friend of children all over the world. It specializes in the relief of children. The World Health Organization WHO was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948. To work on international health, 7th April is now celebrated all over the world as World Health Day. WHO advises member countries on public health and on the control of diseases and makes war on many widespread diseases. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. An example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot, wet climates. Few die of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives. Indonesia, as soon as it became an independent nation, asked the United Nations to help them in their war against yaws. There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. UNICEF supplied medicines and other requirements, and the World Health Organization sent medical experts to train Indonesian workers. Indonesia supplied buildings, workers, and all the requirements that did not have to come from abroad. In 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 13 lakh who had yaws. Many villages are now free from yaws. In another few years, practically the whole country will be free from it.
Hunger is the special problem of the Food and Agriculture Organization FAO, which was started in 1943. It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plants and animal diseases, how to protect food in shortage, and in general how to increase the yield of farms, fisheries, and forests. It also publishes useful literature on agriculture, forestry, and fishing. The United Nations has a special organization to advance knowledge, science, and culture, UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. Less than half the world's children go to school. Most of the human race cannot read or write. Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read. But UNESCO has found that where most of the people cannot read, learning their letters is not what they need to begin with. They need to learn some practical improvements in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that, they realize the advantage of learning to read. UNESCO cannot find the money to teach hundreds of millions to read. What it can do is to show the various member nations how to go about the work and supply certain kinds of training and aids. As new ways of teaching by books, pictures, films, or radios are worked out, the experience is reported to other countries where these may be useful. UNESCO tries to advance human well-being through education, science, and culture. This advances international understanding